Good morning to all my dear students. Yesterday we saw that what is bank reconciliation statement as an introduction. Okay, so bank reconciliation statement means what? Basically, we are businessmen, we are maintaining cash book. Okay, see, this is our cash book. We are businessmen, we are maintaining this cash book, and on the other hand, we are having our bank account with bank. So bank is also maintaining your bank account. Yes or no? So whatever the transactions you are making through bank, so those transaction we are maintaining in cash book, and bank is maintaining only and only banking transactions. Okay, cash related transactions सिर्फ अपने पास रहेंगे. Is that clear? In the cash book only. Okay, but only and only bank related transactions will be there in the bank account. Okay, जो हमारा बैंक अकाउंट है, that bank account the bank will maintain, and such account bank will maintain in the book, and such book is known as passbook. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट ही दिखेगा आपको, बैंक रिलेटेड आइटम्स, एंड हियर कैश एज वेल एज बैंक रिलेटेड आइटम्स यू विल सी इन द कैश बुक, जो कि हमने सीखा है इन द डबल कॉलम कैश बुक में. इज दैट क्लियर? ओके, द सेकेंड थिंग इज वॉट? द सेकेंड थिंग इज कि वॉट एवर द कैश बुक यू आर प्रिपेयरिंग, okay, so in your by cash, if money is coming into business, okay, and at the same time through check, मतलब आपके बैंक में भी जो पैसा आता है, okay, whatever the inflow are coming through cash or through bank, so that thing you are going to record in the receipt side of cash book. Okay, and that receipt side of cash book is covered under debit side. ओके, एंड वॉट एवर द पेमेंट्स यू आर मेकिंग, ओके, जो कुछ भी एक्सपेंसेस हो रहा है, जो कुछ भी खर्चा हो रहा है, किसी को आपने चेक इशू कर दिया फॉर द पेमेंट पर्पज, सो बैंक रिलेटेड और कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन पेमेंट से हो, सो दोज पेमेंट ट्रांजेक्शन्स यू विल कवर्ड अंडर क्रेडिट साइड. ओके, दिस इज वॉट कैश बुक. वेयर इन पासबुक में क्या होगा? ओनली एंड ओनली बैंक रिलेटेड एंट्री. अगर सपोज बैंक थ्रू आपने कुछ पेमेंट कर दिया, सो बैंक विल डेबिट दैट अमाउंट, ओके, थ्रू पेमेंट साइड. एंड आपने बैंक थ्रू आपने कुछ पैसा कमाया, ओके, इफ़ योर सैलरी इज बीइंग क्रेडिटेड इन द बैंक डायरेक्टली, ओके, इफ़ इंटरेस्ट आपने कुछ भी पैसा रखा है बैंक में, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सो दैट इंटरेस्ट इज नथिंग बट रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड सच रिसिप्ट बैंक विल क्रेडिट इन योर अकाउंट. इज दैट क्लियर? इसलिए मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड. ये बैंक के थ्रू अब हमें मैसेज आता है कि आपके पास इतना पैसा आ गया है इन योर बैंक अकाउंट, और एल्स योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इन केस ऑफ व्हाट? इफ़ यू आर मेकिंग रिचार्ज ऑफ योर मोबाइल फोन, ओके, थ्रू पेटीएम और डेबिट कार्ड. येस और नो? सो व्हाट डज इट मीन? आपके अकाउंट में से पैसा डेबिट हो गया. कौन से अकाउंट में से? बैंक अकाउंट में से पैसा डेबिट हो गया. इज दैट क्लियर? Okay, now let's move on towards next topic. See, in practice, cash book bank balance is sometimes different from passbook book balance. Okay, कभी कभी क्या होता है, कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस जो कुछ भी है, इट शुड बी इक्वल, बट इट विल नॉट बी इक्वल समटाइम्स. ओके, वाई? बिकॉज देयर आर सर्टेन रीजन्स. Okay, so you will learn about the causes of differences and method of reconciling balance of these two books by preparing bank reconciliation statement. So how you are going to equalize these two balances? You are going to equalize these two balances by having reconciliation statement. Okay, now see, a copy of bank statement is issued to current account holder periodically by bank. So bank statement is compared with cash book for analyzing the causes of differences in the balance of two books. बैंक क्या करेगी? ऑन अ रेगुलर इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल मंथ एंड में और एल्स क्वार्टर एंड में, बैंक विल इशू अ स्टेटमेंट ऑफ records of transactions, okay, a statement of list of transactions periodically. So by having those list of transaction, you can reconcile your cash book. Okay, so bank statement is compared with cash book. That thing is necessary for analyzing the causes of differences in the balance of two book. What does it mean?
cash book we are maintaining, okay, whereas passbook passbook has been maintained by bank. Okay, so passbook में जो entries होंगे वही entries it should be there in the cash book as on that date. Yes or no? So what you have to do, you always have to follow. So here you always need to follow passbook entries only. Okay, if in your passbook entries whatever the transactions has been done, so the same transaction should be there in your cash book. Is that clear? Okay, so whenever you will reconcile your bank statement, so at that moment first give your preference to passbook, और passbook को follow करते हुए you have to maintain your cash book. Is that clear? Because bank is the institution who will never done any kind of error or omission of any kind of transaction. Yes or no? अगर आपको 5,000 rupees का चेक मिलना है, whenever the bank will credit that check in your account, at that moment only you have to add it in your cash book. Is that clear? Okay, or else whenever, see, this is your passbook and this is your cash book. Okay, whenever the bank will debit some amount from your bank account, मतलब लेस करेगी, कुछ चार्जेस हो गए, इफ़ देर आर एनी बैंक चार्जेस, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ओके, यू हैव गिवन परमिशन टू योर बैंक टू डायरेक्टली डेबिट दैट charges, electricity charges हो, telephone bill charges हो. So whenever the bank will minimize those charges from your bank account, at that moment only you have to show it in your cash book also. Is that clear, all of you? And that is why we reconcile bank statement, because हमें पता है का बैंक कब डेबिट करने वाली है, हमारे अकाउंट में से कब पैसे निकालने वाली है, फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और फॉर द पेमेंट ऑफ अनदर एनी काइंड ऑफ चार्जेस. ओके, सो जब हमें पता चलेगा कि अरे बैंक ने इतना पैसा हमारे अकाउंट में से माइनस किया है, एट दैट मोमेंट वी ऑल्सो हैव टू मिनिमाइज दैट अमाउंट. इज़ दैट क्लियर? फ्रॉम कैश बुक. तो ऐसे जाकर भी हमारा कैश बुक और पासबुक क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा. दिस इज द ओनली वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू. Okay, but there are number of certain examples which we are going to study in reconciliation statement. Is that clear? Okay, so bank statement is compared with cash book. Okay, what does it mean? Bank statement means what? Bank statement is nothing but passbook. Okay, so passbook we will compare with cash book. What does it mean? Cash book को properly maintain करने के लिए हमें always we have to follow only and only passbook. Okay, for analyzing the causes of difference in the balance of two book. Okay, तो पासबुक में जो कुछ भी एंट्रीज होगा वो हमने अगर कैश बुक में नहीं किया हो, सो वी नीड टू ऐड दैट. ओके, नेक्स्ट वी विल सी डेफिनेशन. A statement which reconciles the bank balance as per the cash book and the balance as per passbook, showing all causes of differences between the two. Okay, what does it mean? See, statement एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि हम बनाने वाले, जो रिकंसाइल करता है, किसको रिकंसाइल करता है? बैंक बैलेंस को. ओके, किसको? नॉट कैश बैलेंस, हाँ, ओनली एंड ओनली बैंक बैलेंस को रिकंसाइल करता है एज पर कैश बुक. जो हमने कैश बुक में बैंक कॉलम में जो कुछ भी लिखा हो, वॉट एवर द एंट्रीज वी हैव डन इन द कैश बुक अंडर बैंक कॉलम. ओके, एंड द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. पासबुक में जो कुछ भी एंट्रीज हमारी बैंक ने किया है, इन विच अकाउंट? इन आर बैंक अकाउंट. ओके, सो वो एंट्रीज में देर आर सर्टेन डिफरेंसेस. येस और नो? देर आर सर्टेन अप्स एंड डाउन्स. ओके, सो वो अप्स एंड डाउन्स को, डिफरेंस को क्या करना? ऑल द टू शोइंग ऑल दोज कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस एंड मेकिंग दोज डिफरेंसेस इक्वल. दैट इज़ व्हाट? प्लस माइनस करना पड़ेगा. प्लस माइनस करके जो कुछ भी आप इक्वल कर दोगे दोनों का एंट्रीज को, दैट स्टेटमेंट इज नथिंग बट रिकंसाइल स्टेटमेंट. इज दैट क्लियर? Okay, now let's move on towards the reasons between cash book balance and passbook balance difference. Okay, this is one of the most important topic, okay, which you need to consider while making reconciliation statement. See, they have given you two differences. एक तो time difference, that time difference I have given you one example. Okay, and error or omission made by businessman or bank. ओके, नाउ सी व्हाट इज़ टाइम डिफरेंस. मैंने आपको कल भी बोला,
सपोज 5,000 रुपीज़ का चेक आई हैव डिपॉजिटेड ओके इनटू बैंक, ये बैंक में मैंने डिपॉजिट कर दिया। वेन सो मैंने डिपॉजिट कर दिया, मुझे 5,000 मिलने चाहिए थे, वो फ्यूचर में मिलने वाले, बट इन कैश बुक में आज से ही क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ कि मुझे 5,000 रुपीज़ मिल गए। 5,000 रुपीज़ मिले हैं मुझे, नो, आई गॉट ओनली चेक ऑफ रुपीज़ 5,000, बट वेन इट विल गेट क्लियर, it will get clear after some time when I will issue my check for the clearance okay in the bank, and whenever the bank will clear my check, at that moment my actual money will get plus in the bank account okay, and that moment only I have to make plus sign or I have to add my 5,000 rupees in cash book bank balance, yes or no, बट मैंने पहले से ही ऐड कर दिया है, सो दिस थिंग शुड नॉट बी डन ओके, एंड दैट इज़ वाई बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस, बिकॉज मैंने आज मंडे है सपोज, सो आज मैंने मेरे अकाउंट में मतलब मेरे कैश बुक में आई हैव एडेड 5,000 रुपीज़, बट बैंक ने सैटरडे को वो चेक क्या कर दिया, सैटरडे को वो चेक क्लियर कर दिया, सो देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 5 days मंडे टू सैटरडे, येस और नो। सो दैट टाइम डिफरेंस की वजह से भी क्या हो जाता है, इफ़ यू विल सी एज ऑन मंडे, यहाँ पर भी मंडे को और यहाँ पर भी मंडे को, इफ़ यू विल सी कैश बुक का बैंक बैलेंस एंड पासबुक का बैंक बैलेंस दोनों को देखोगे, सो देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 5,000 ओके, यहाँ पर 5,000 प्लस दिखेंगे लेकिन यहाँ पर 5,000 दिखेंगे ही नहीं, yes or no, as on Monday, so that thing we need to rectify, एंड ये रेक्टिफिकेशन क्यों होने वाला है, बिकॉज ऑफ टाइम डिफरेंस, एक जगह पर मैंने मंडे को क्या कर दिया, एंट्री कर दिया, बट बैंक विल मेक दैट एंट्री नॉट ऑन मंडे बट ऑन सैटरडे, इज दैट क्लियर ओके, सो दिस इज व्हाट टाइम डिफरेंस, सी लेट्स स्टडी इट। ट्रांजेक्शन्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड पासबुक एट द सेम टाइम, अभी मैंने बोला बराबर, there is a time gap between recording transactions in two books. For example, when the businessman deposits a check into bank, here it is, when businessman deposits check into bank for collection, it is a transactions for him and he immediately record it in his cash book. Immediately क्या कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, मुझे 5,000 मिल गए ओके, इज दैट क्लियर। सो इट इज़ द ट्रांजेक्शन फॉर हिम एंड इमीडिएटली records it in a cash book okay, on the other hand bank will record it in passbook only after collecting the amount of check, yes or no, वो जो चेक का अमाउंट जब भी कलेक्ट करेगी बैंक ओके, इन रियलिटी व्हाट डज इट मीन, वेन एवर दैट चेक विल गेट क्लियर्ड, सो एट दैट मोमेंट ओनली बैंक में आपका पैसा जमा होने वाला है ओके, एंड दैट मोमेंट ओनली पासबुक में बैंक विल ऐड दैट एंट्री ओके, सो एट दिस पॉइंट टाइम एंट्री फॉर ट्रांजेक्शन अपीयर्स ओनली इन कैश बुक, thereby creating a difference in the balance of two books which is to be reconciled, is that clear। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन हो गया मेरा कभी कैश बुक में ऑन द स्पॉट हो गया, चेक क्लियर होने से पहले आई हैव एडेड माई 5,000 रुपीज़ इन माई कैश बुक ओके, बट बैंक कब पास करेगा वो एंट्री, वेन एवर द चेक विल गेट क्लियर, सो दिस इज व्हाट टाइम डिफरेंस ओके। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है, एरर्स एंड ओमिशन मेड बाय बिजनेसमैन और बैंक। नाउ व्हाट इज दैट, सी differences in the balance may also arise due to errors committed by bank or businessman okay, errors क्या हो सकते हैं, सी फॉर एग्जाम्पल बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक रुपीज़ 540 ओके, से फॉर एग्जाम्पल दिस 540 इज माई इलेक्ट्रिसिटी बिल ओके, ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो मेरी बैंक मेरे बिहाफ में पे करती है, इट इज़ अनदर फंक्शन ऑफ माय बैंक ओके, यूटिलिटी फंक्शंस में से एक है वन ऑफ कि पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, येस और नो, वी हैव स्टडीड दैट इन बिजनेस स्टडी ओके। सो 540 रुपीज़ बैंक ने मेरे अकाउंट में से डेबिट कर दिए, व्हाट डज इट मीन, माइनस कर दिए, इज दैट क्लियर। सो 540 इज़ रिकॉर्डेड एज अ 450 इन कैश बुक, लेकिन मुझे लगा कि नो, मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 450 आया है, सो मैंने 450 लेस कर दिए फ्रॉम माय कैश बुक
Okay, so there is a difference between 540 and 450. Yes or no? So here is the transactions appear in the both books. दोनों बुक में ट्रांजेक्शन अपीयर है. ओके, विथ सेम फिगर. इलेक्ट्रिसिटी बिल 540 से माइनस ही हुआ है फ्रॉम बैंक अकाउंट पासबुक, एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल माइनस ही हुआ है फ्रॉम द कैश बुक बैंक बैलेंस फॉर ₹540. ओके, माइनस तो हुआ है बट दैट फिगर्स आर डिफरेंट. Okay, so here the transactions appear in both the books but with wrong amount, causing a difference in balance of two books. Okay, तो ये क्या है, ये भी एक रीजंस है कि दोनों बुक के बैलेंस में डिफरेंस है. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फॉलो the electricity bill which has been deducted by our bank. Okay, so बैंक ने जितना डिडक्ट किया है उतना ही हमें डिडक्ट करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? सो हियर आर सर्टेन रीजन्स. और भी हमें कुछ सीखना है इसमें रिकन्सिलिएशन में, बट दैट थिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हियर वी आर डन फॉर द डे. थैंक यू.